dot ball. And that ends the first over. 8 on the board. South Africa goal, very explosive. 6 on the board, my corrections. A brilliant approach here by the South African under-19 side, and skipper Maposa clearly hitting that middle and leg stump line with that field placement at short mid-wicket, just trying to make sure they squeeze things in. Left-hand bowlers, always difficult customers to come by. However, it's 7 for 1 for no loss, after one over for no loss. First over started and finished by Ashley. And second over, we start with Chanel facing the first ball of the inning. Wide ball goes, fielder in the deep. Misfield by the fielder, and that ball is already at the boundary. Another boundary for South Africa. 3-1 at ZIM. Disappointing for Zimbabwe. Foolish delivery. Goes all the way, but went through the legs of the fielder. Disappointing outlook here. Hopefully enough time to fix things on the field, but it will be more boundaries for South Africa. Better line this time, just on that middle stump line. Foolish delivery. Christiana bowling from the Court of Appeal end of the TBS cricket over. The rain was quite scary this morning, but good to see the clouds opened up. Another wide delivery. You just have to be a bit more cautious here. Watching the extras. Too early to look at the current run rate. 11 and over. Deliveries yet to come. You can smell that wicket. She's really tying down the batter down in this over. She's getting closer to the wicket with every delivery wide of the first. Just a single, but she's been very consistent in that line and just the length that needs to be corrected. Take out the 5 wides, maybe, yes. A brilliant one this time. The umpire not interested. It's nice little chip into the batter there. Looking at that ball moving just well enough to trouble the batter. Good backing by Ashley to remain on the batting crease. Wanted to go fishing there, Chanel, but didn't make the right contact. Didn't hook the ball in the right place. And that ball will be dotted, much to the pleasing of the Zimbabwe under-19. 1 run off the bat so far in this over. 2 extra runs, wide 4 and another wide. Looks to go big, but straight to the fielder at mid-off. Didn't really get hold of that one. Christiana trying to tighten things up a bit. Great conditions out here today after that 30 minutes downpour.
call it the nature's relief. Beauty misses everything this time. So unlucky. This is beautiful piece of bowling. That lead back edge off the bat. Going to the wicket, that late turn off the ball, even the keeper didn't anticipate that. And Betel Zinyama almost with another error in the final leg region. 17 runs so far for no wickets lost after 2 overs. Captain is back from the pavilion end for a second over. 8 overs, 8 runs in the first over. That is a tight delivery outside of off storm. The bowler is keeping things very controlled here, not giving the batter any room to free her arms and play. If they can stay consistent on this line, then this will be some positive for ZIM under 19s. Shaky first 2 overs of this innings. But so far it's been good now. Again down the leg side, and the keeper fumbles that one. It will go all the way. These are needless runs given by ZIM. And South Africa will be happy with the scoreboard tickings with these extras, where they look to take advantage with the bat. That ball could have been dealt with better. As that swing in the ball, the wicketkeeper did her very best, and there was no one in that deep region to stop that boundary. Another 4 for South Africa. It seemed very, very efficient with playing off the bat, and now being given the chance or being given 3 runs. Lovely played into the gap. Didn't race all the way to the boundary, but they all settled for 2. Huge shot off the back foot. South Africa under 19 going very explosive. Slow start in the first over, and already 25 on the board in less than 3 overs. Still within the power play over. South Africa under 19 already and dominant. Ooh. Delightful piece of batting by Chanel. Played up. There is no stopping that. That ball races all the way to the boundary. 4 of 4. She found the gap beautifully in above the infielders and straight toward the boundary. You could watch that shot again and again. That's it. And slow again. Foolish delivery. She goes big over mid wicket. And that's the required aggression if you want 180 on the board. Maker Van Voice made that clear earlier at the toss, and that is the approach we've seen from Ashley and Chanel. Just making sure it counts without considering the extras. Misses that one. The keeper will have to help this team here today. Boundary. It's boundary galore. 2 consecutive ones. And that brings us to the end of the 3rd over. And score is on 33 for no loss.
From Cordova PN, she comes, swings beautifully. That was a run-out chance there that wasn't properly utilized. Good thinking from Chanel to return back. And beautiful stuff from the fielder. Already anticipated it was going to miss the bowler. But Christina was very compact, didn't react in time for that run-out chance. And Chanel and the South Africa bench survives the scare. Oh, lovely pull shot to the leg side. Into the gap. There was no stopping that. Calculated the length and met the ball at the right placement. Aggression is a watchword now for the South Africans. Plays that one off. A leg stump that races away for the boundary towards the cricket lab end of this oval. There are beautiful indoor facilities there. Every team has taken advantage of what facilities they've got here at the TBS Cricket Oval. Still in the fourth over. Score on 37 already. Straight to the fielder, covers. This time giving her the room. Didn't really get hold of that one. Perhaps trying to get through the gap on the offside. 1, 2, 3, 4 fielders in that cordon on the offside. That's full toss and well treated by Chanel. Christina will have to watch that one, slow things down a bit. Seems she's hurried into that one. Full toss on that leg stump line. Now it goes the way towards fine leg for a much deserved boundary of that delivery. Big shot to the boundary, and it's another 4. 3 4s in this over for South Africa. Aggression means aggression, and again the replay there. She goes big, and this time over, and another deserved boundary. More and more we would see. It looks like 45 already. South Africa taking advantage of this power play. Wide again, smashes that one over the top, but this time just outside the inner ring, and they will get a couple. Brilliant running between the wicket. Chanel and Ashley, this partnership, very solid. That brings us to the end of the fourth over. Score is now 47 for no loss. New bowler from the pavilion end, it's Salem Museka. Still yet to pick a wicket in this tournament. 2 matches played, no wickets, and 4.2 overs bowled. As Team Zimbabwe have decided to take the pace off the ball and come with a much more slower approach as they look to break this
already good looking partnership of the South Africa U19. Slowing things down a bit, and Salem Museka. Brilliant stats. Just field placement 1, 2, 3. 2 fielders outside the inner ring. Oh, brilliant shots. This will go through the fielder at covers. Couple of runs for sure. He completed the second one. And deep mid wickets and a deep square leg. The fielders outside the inner ring. And players down. That was the previous ball that was sent to the boundary. On the leg side it came, and the face of the bat properly connected to the boundary. That was how those boundaries are big coming up. Big one, perfectly timed. South Africa are starting very early, starting off very, very explosively. .49 runs partnership already for Ashley Bernard and Chanel Venter. Ashley Bernard with 18 runs already, all 15 balls. Chanel Venter didn't bat in the previous game against Rwanda. She went down the batting order. Now she's coming. Her previous being 8 against Ghana and already having 16 of 11 balls versus the Zimbabwe U19. Good batting needing for both batters as they have showed much improvement and much more contribution. No wickets yet, and we're still in the power play inning. There will be a delay in the resumption of play as a player of the Zimbabwe side is down and is receiving treatment.
play can resume as the player is on feet to play, and the 12th man has had to step up and come in or play. And now play can resume. Salem, 2 balls bowled already, and 4 more balls to go to finish the 5th over. Ashley still the batter on strike. 21 being the highest against the Rwandan side. Not too much of a performance against Ghana, 8 of 10. The next game didn't win it, but at 21, getting close to that figure. A late edge. Start ball races to the boundary, no one in the deep. And 4 more runs climb the board for Team South Africa. A brilliant shot there, more and more runs. Difficult times here. Mandizora is off the field, replaced by Mpofu Uvarache for Zimbabwe U19. She goes big, finds that gap, but Fielders comes around it nicely. Ashley is trying to consistently maintain the aggressor's role. Salem Museka still trying to slow things down. Creates that room, no contact there whatsoever. Decent line board. On a wide delivery, not what you want to see if you're watching from Harare. But for sure, South Africans are happy to take those extras. The pressure is up. Comes down the wicket, goes over the top, in there for the take. Yes, it is taken. The skipper herself makes sure, leading by example. 55 for the loss of 1 wicket after 5 overs. His channel will depart for 16 of 12 deliveries. Fantastic bowling from Salem was brought in as Zimbabwe decided to take the pace off the ball, and just outside of the inner ring, and the captain was quick to the ball, went underneath it and locked arms round the ball. First wicket for Zimbabwe U19, and the team can build up momentum and feel confident going into the batting order of the South African U19. It's 5 overs completed, 55 for 1. Number 14 with Abili Utoba, the new batter in to finish the 5th over. There was that catch, met the ball a midway point, but not enough power behind that ball, and the keeper, the right person,
leader by example, starting off the wicket decimation of the South African under-19. Zimbabwe under-19 will stick to spin bowling. As Tawanyasha is the bowler coming from the Court of Appeal to bowl to Ritabile. Only one batting in for Ritabile, 17 off 12 in the game against Ghana. Didn't get the chance too bad against Rwanda yesterday, and now she's back in the top batting order, coming in one down, and we'll look to continue from where Chanel stopped. Last over of the power play. Narrowly escaping a run out as that ball came off the boot of the bowler to the wicket. Good return by Ashley. Should have been an out if Ashley wasn't lucky to be back on time. Lovely display of the bat and into the gap, 1 run. Just surviving a scare, Ashley, and now she will come on strike. Wide call by the umpire. 1 more run, a free run for Zimbabwe. Turning out to be a very good over here to close off the power play. Full on that occasion, well driven. But there is a sweeper at long offer who cuts it off to only 1 run. Very good batting here, Peter, you'd say, from the South Africa under-19s. They've really made a very good use of the opportunities given by the Zimbabwe under-19s in the field. The tension is building from every delivery, every ball that comes into the deep, into the gap. Lovely short play, 2 in between covers and points, and racing all the way to the boundary for a beautiful 4. Lovely shot there from Chanel Vental again with offered square driven. No chance whatsoever from the fielder in the deep at long off, who had to cover a lot of ground, but in vain. Last ball to come in the power play. Already they are sitting on 62 for the loss of 1 wicket is the South Africa under-19s. Another run-out chance miss. Tower had all the time in the world, didn't react on time to that ball, missed the run-out chance. And South Africa under-19 continued to feast off the fielding errors of the Zimbabwe under-19 side. And that's the end of the power play. A very productive power play here, you'd say, from the South Africa under-19s, having won the toss and decided to have a bat first. They found themselves on 62 for the loss of 1 right after the power play. Going to be a very interesting passage of play, given the way that Ashley Barnard, who's now sitting on 23 off 17 with a new batter in. Tabile. They would love to, of course, keep getting those boundaries. They've set a very good platform for the next batters to come in, including, of course, the captain, Mika van Wyk. I beg your pardon, Mika van Vost. Spin coming in from the pavilion end. Straight away picks up a wicket.
Very beautiful ball, beautifully bowled by Salem. Got the first wicket of Chanel and has picked up another wicket. This time it's the wicket of Ritabili. And the Rwanda side are going to boom off of this. Picking up a wicket from the very first over of right after the power play, beg your pardon. They would love to keep picking those wickets. Swing and a miss, playing across the line before even getting off the mark. A very crucial breakthrough for the Zimbabwe on the 19th side. So tell me, Bob, now there's been there's now a chance to have more fielders outside of the inner ring. Where would you like to see the fielding placements, given now just how adventurous and precise the South African batters have been in terms of finding space on the field? Very good question there. I don't mind having three fielders on the onside, a deep square leg, deep mid wicket, and a long on. Given, of course, that in the power play they picked up 3 or 4 boundaries on that onside. It tells you a thing or two. They are very strong square the wicket. And of course, have someone in the deep extra cover. They've been bowling it all over the wicket. Are the Zimbabwe U19s? They haven't let a lesson. 62 for 1 after 6. 62 for 2, I beg your pardon, after 6.1. As the captain, of course, joins Ashley Barnard at the crease. Captain Mika van Voster, who had a very, very good tournament 2 months ago in Durban. Boy, of course, these two sides faced off. And South Africa U19s got the best out of the Zimbabwe U19s. Taking their time to set the right field for the captain. You don't want to let her get her eye in. She can be a very, very dangerous person if she occupies that crease. Up until today, Salem had yet to pick a wicket in the last 2 games, and today she's already picked up the 2 wickets that the Zimbabwe under 19 women's team have had. And it's looking very, very. The game is now becoming a much more even game for both sides. This, of course, they would love to build a partnership. Is the captain and Ashley Bernard. The captain, on the other hand, a lovely shot again. Takes the healthy outside edge, looking to clear the fielder. Of course, that covers. The chase will be on by the 2 fielders again. Chase in vain. They've scored 4 boundaries in that particular region behind the wicketkeeper. Something they need to readjust, given that the wicketkeeper has given away a lot of byes, and the field setting, as you mentioned earlier, you can see the short third man was very, very wide, which gave her no chance to save that boundary. Just when it looks like the momentum of the game is in the hands of the Zimbabwe, South Africa pull off something off their sleeves and make sure and reminds the Zimbabwe under 19 that they also have much more control of this game, given their target, and they're doing everything possible to get to that target sooner than possible. One more ball to go in this over. Salem already 2 wickets, 13 runs conceded. Ashley finds that gap, late edge. Races all the way to the boundary, no fielding placement, and South Africa under 19 are taking advantage of every single fielding chance and every fielding space that they get. Lovely boundary, I would say, Bob. Once again, it's the field placing here for the young lady chevrons with offered on that occasion through the kitchen sink on that. Took the outside edge, no chance again from the wideish short third man as they picked up yet another boundary. They're still moving at 10 runs and over. It could be a very, very big worry here for the young Zimbabwe U19 side. 73 for 2 after 7.
A new bowler is being brought in to complement Diwa, coming from the Court of Appeal end to Mickey Van Forst. Not finding the space there, Mickey. One of the most daring batters in this tournament, played 2 beautiful sixes against Rwanda in the last game. Much more to the displeasure of the Rwanda side as they were looking very, very troubled. Low feeding errors, and she maximized that confusion in the team. Good bowling there from the new bowler from the Court of Appeal end, Tadiwa. But again, when you look at the way the captain, Mika Van Vos, is going by with her game, she came in finding Ashley Barnard in full touch, and she's made sure every time she faces, she's rotating strike for her. Yes, she's been the best batter of the South Africa Under-19s, having scored the second half century of the tournament. And of course, that cameo that almost got them over the line against Team Rwanda, where they lost, of course, by 4 runs with 37 runs with 2 maximums and 2 boundaries. Strike rate have been really impressive for Van Forst. 50 of 34 against Ghana, and Rwanda 34 of 27. Seeing how close that Ashley is to that half-century mark, she is actually giving her all the chance she needs to do that. Goes cheeky, but not that much effective from the informer Ashley Barnard. She would love, of course, to capitalize on the opportunities given in the power play by the Zimbabwe Under-19s and carry her team. They are yet to get a second half centurion in their side. She's already into the 40s of 26. She's given them a very, very good platform for a big total. Cut away again, straight to the fielder. Run out chance. And this time round, the run out is completed. And very unnecessary runners. That shot was direct to the fielder out covers. And now Mickey Van Forst with this miss the field and exits the field of play. For less than 10 runs, the first time we've seen her get less than double figures. And this time, he was our own undoing. The shot was off her bat, and so was the call. The quick feet of the South African batters not paying off this time. Direct throw, and the bowler was very effective. Got to that ball off the first peak and dislodged the bills. Easy call for the umpire. Another wicket for Zimbabwe Under-19. And of course, very good fielding effort there from the captain, who chipped in a very, very good throw back to the bowler to make it more easy for her to run out the captain. That wicket falls. 77 runs on board for the South Africa Under-19s. Sifukule, the new batter, Sifukule had a very beautiful performance against Ghana in the opening match. Built a 50 runs partnership. The first 50-run partnership that we saw in this tournament between Sifukule and the captain herself. She didn't get the chance to bat in the second game against Rwanda. She's back here already in the batting order, very early in the batting order, as they've set a target of 180, and they will need all hands on deck to get to that figure. On the other hand, the third wicket has been the biggest, of course, you would say, for the Zimbabwe Under-19s, given that Mika Van Voster haunted the Zimbabwe Under-19s back in January in that series, of course, the youth series. Turn and bounce on that occasion. No chance there from the new batter in Sifukule. As we come to the end of the 8th, it's 77 for 3. That run out again, a very unnecessary run taken. That ball was yet to beat the fielder, and the guts, the intuition of Mickey Van Forst was to pay for that. Sifukule, on the other hand, joins Ashley Barnard. She scored 37 in her first game with only 2 boundaries. Is Sifukule, so expect a lot of running between the wickets. As of course, she will be taking strike. Beloved Biza, the experienced Beloved Biza, comes into the attack from the
pavilion end. They have a deep mid-wicket, a deep square leg, and a long on. Interestingly, only 3 fielders are outside the ring, given that South Africa under-19s are moving at 9.6 runs and over. They would love to see the experienced beloved Biza try and slow down the rate if they are, of course, to get their very first win in this tournament, the 5th edition of the Nigeria Women's Invitational Tournament, Patricia Kambarani Cup, into the path straight away, but the umpire says that was straying down the leg side. Very aggression there from Sifokule. Not giving the batter any room to score. Zimbabwe have come up with a spin. Spin has gotten them 3 wickets, and they plan to stick to it as the game progresses. Full length and cautiously dealt with by Sifokule. An error could have seen a wicket. Is it? No, it is not. Quick feats that we expected, and one more run adds up to the board for South Africa. Let's have a look at that again. Full on that occasion plays it straight. A little bit of fumble, but look at the throw. Poor communication from the two. Nearly gets the in-form batter out. Very good, of course, decision by the umpire. I'm not sure why they are in a hurry. They are moving at 9 runs and over, given that the captain spoke about 180. They are within the reach. Having lost, of course, Peter, the captain, with a run out. You can't afford to lose yet another wicket. I'd love to see them stabilizing this and build a partnership. Yes, they've bat very deep is the young South Africa under-19s. Those late turns behind the ball are giving Ashley Bernard much difficulty in dealing with. She's had to be patient, and with off that last bounce of the ball and below Biza's experience with the national team is coming into play. Loud appeal given by the umpire. A reverse sweep backfires for Ashley Bernard. Big wicket. Not the way she wanted to go out. Just 10 runs shy of half a century, of getting that half a century mark. And she walks back very disappointed. Let's have a look at that again as she makes the inroads. Is the experienced beloved Biza. Goes cheeky, but not effective. Very easy decision from the umpire. That would have crushed middle stump as they lose their 4th wicket. A very good comeback here from the Zimbabwe under-19s, given that right after the power play, South African under-19s were sitting on 62 runs. The pressure finally pays off as the bowler has gotten a reward. Kept Ashley Bernard there quite tight, and Ashley couldn't find the offside on the gaps for a run, and just had to try to go to the leg side where they've gotten 3 boundaries multiple occasions. This time it backfired, and beloved Biza has the last laugh. And now we can just wait. J. Lee Philander, the wicket-keeper batter, is the one in the batting crease now for the South African under-19. She's gone for already only 1 run, picking up a wicket, of course, of the informer Ashley Bernard. Yet again, a set batter doesn't convert. 40s into the big totals, 78 for 4 after 8.4. Her 3.2 overs are going to be very key in this particular fixture. Is beloved Biza, given, of course, the experience she possesses. She has played ODI cricket for the Lady Chevrons. She hasn't got enough runs with the bat, of course. One of the reasons the Zimbabwe under-19s having gotten off the mark with a win in this 5th edition. Last ball to come. A tidy over to start off her quarter is beloved Biza. In the eye this time round, won't be taken, as they will be looking for the double at these two. But this time round, her partner says, hold your horse. We just lost. Oh, very sloppiness again to give them a double. Unnecessarily throw there, you'd say. Error in the throw there, and they help South Africa turn 1 into 2. 6 balls completed. It's been a very disciplined spell for beloved Biza. 9 overs completed, 80 runs, 4-4. 17 extras ball by the young lady Chevrons. Very suicidal,
especially in these short format games. Nearly bowling 3 overs in extras. There you see the batting chart. 40 from Ashley Bernard, 40 off 29, 6 boundaries. 16 from Chanel Venter, nothing much from Rita Bile and the captain. But these two, Sifokule Masilela and the wicketkeeper batter, Jailia Filanda, they would love to make a partnership to steady the ship. 80 for 4 after 9. This match is going to be a huge test for the Zimbabwe U19 chevrons. They've not really gone beyond an 80-run mark in this tournament, having 80 against Rwanda and 83 against Nigeria. Still much more of us to play. It remains to see how much they've improved. Yesterday was a rest day, enough time for teams to go back to the drawing board and analyze what went wrong and where they've been shortcoming. There's a thing or two, Peter, given that, of course, they haven't crossed, as you just mentioned, 80 runs in this particular tournament. They would love to cut down those extras and make it very hard for the South Africa under-19s. A loud appeal on that occasion. Not out says the umpire. I would love to see that on the replay. That looked very, very close as the umpire signals buys. Just narrowly missing on the wicket. The wicket keeper has been quite relaxed. Always expecting those balls. From what I've seen and understood about the wicket keeper, wherever there is a swing, there's an assumption that the batter has played, and those late misses always get her off guard, and that has been more of an advantage for South Africa. She's not had the best day in the office behind the stumps. She's given away 3 byes that went for a boundary, and now a stamping chance. Make that 2 back-to-back stamping chances that goes down. Jay Lee is left frustrated. Seeing that ball, the length is good for play, but not expecting that turn. And that ball, this time around, the ball stayed low. Much to our disappointment. Jay Lee, on the other hand, she's been given 2 chances from the wicketkeeper batter. She won't give them many, as she's been the best behind the stumps. One of the best, of course, wicketkeepers in this tournament. Half tracker on that occasion pulled away, but there's the sweeper. They'll settle for only 1 run. But so far we've seen South Africa almost getting run out on multiple occasions. About 4 run-out chances, only 1 has been taken here. Do you think that they should take less risk or just continue with the game's flow? Swing and a miss knocks her over this time rounder. Make that the 5th wicket in no time for the Zimbabwe under-19s. They've done a tremendous job right after the power play, making sure they picked up 4 wickets in no time without conceding a lot of runs. Let's have a look at Gain on the replay. The frustration taking the best of Jeli Filanda. That ball was meant to be defended, but just wanted to get something on the board as quickly as possible for South Africa. And she lost her wicket in the process. Already into the drinks break. 82-45. Do enjoy some of the highlights while the teams get themselves a much needed break and go back to the drawing board briefly.
Beloved Biza starts the innings break, the drinks break, and Miatelo kicks off. Miatelo is the new batter pairing in with J. Lee Philander. J. Lee getting herself off strike, sending Mia on strike. Mia finally getting a batting inning against the Rwandan women yesterday. The day before, the rest day, my corrections. Did well with the bat. The opening bowler has had to come in the middle order of the batting for South Africa under 19. Too much is given, much is expected. And Mia Lelo will need to help the team push to their target. 180 runs was the target, and they're just a little bit halfway into that target run, Bob. Talking about Peter, 180 as the captain, Mika van Voster, who's already back in the dugout, said earlier at the tosser, you feel right after the power play, they are sitting on 62 for the loss of 1 wicket. In the next 4 overs, they've managed to contribute only 20 runs, losing 4 wickets. You'd say the young lady Chevrons have won the next 4 overs. They would love to capitalize on that. They would love to make sure they don't allow any partnership whatsoever. Mia Laro, who is not rabbit with bat in hand, plays this straight back to the bowler herself. Her beloved Biza putting on a shot with the bowler. Bowling her second over. She went for only 3 runs in her first over, picking up a wicket of Ashley Bernard as they send a long offer to the boundary ropes. So she has a long on. Deep square leg and deep mid-wicket. Those are her boundary riders. Lovely piece of bowling once again from our beloved Biza. Taking matters into our own hands. 83 for 5 after 10.4. Right after the power play, they are moving at 10.5 runs and over, and the spinners are spinning a web for the Zimbabwe under-19s, making sure they keep the run rate under 7 runs and over. As we come to yet another tremendous over from our beloved Biza, it's 83 for 5 after 11. And the bowling chart. The captain opening the bowling, yet to pick a wicket. The only bowler who's picked up 2 wickets, Salem Museka and Tadiwa Garuta, and beloved Biza also 1 wicket apiece. A lot of credit has to go to Tadiwa and beloved Biza, going for only 9 runs in their 4 overs. Should be expecting more spin coming in from the Court of Appeal end. We spoke about how running between the wickets is going to be very, very key, given that we had heavy rains this morning. The outfield won't be very, very electric. Shot on that occasion, but there's a sweeper in the deeper. A little bit of a misfield. And they all settle for only 2 runs. Looking for the third batter. Leroy is not the quickest between the wickets. That would have not been a nice scenario. It happened in the first over of play. And almost again, this time in the deep region. The leg side ball was unnecessary from Tower. Didn't really have a fantastic first over. Was withdrawn off the ball and is back in. And this time, much more fuller. Couldn't be dealt with by the batter. And that is dotted. Should love, of course, to correct her line and length is Tadiwa. Full again, works it on the onside. Should be a single. Beautiful play, just good delivery length from the bowler. Good comeback from Tadiwa Mialelo. The bowler, the opening bowler for the side, is going up against another bowler as himself. To the leg side, the ball came and driven into the gap. And they will add 1 more run to the board as Mia takes herself off strike.
This is very smart bowling from Tadiwa, bowling to her fielder. She has two fielders in the deep, a deep square leg and deep mid wicket, and a long on. Given, of course, that they will be hitting to the bigger part. She's made it very, very hard for the South Africa under-19s. Another stamping chance goes down. I beg your pardon, that's cleaned up. Fantastic there from Tadiwa. As Giant Finland, let's have a look at that again on the replay. The batters of the South Africa have been frustrated as the runs are not coming off of bat, and they want to go on to attack every bar as it comes. That shuffle, and the miscalculate of the bounce, good turn off the ball, and that leg stump was the target, and the target acquired. Jay Lee will go back having less than 10 runs to a batting chart. It was bound to happen given that she was given two chances by the wicketkeeper, but this time round she's been cleaned up by Tadiwa, who's been bowling tremendously, bowling her third over, and they pick up their sixth wicket. Is the Zimbabwe under-19s unnecessarily done again from Giant Finland, given of course that they had lost half the side. She ends up exposing her leg stump. The first time we've seen a team testing the batting lineup of the South Africa under-19s. These are the most wickets they have lost. 87 for 6 after 11.5. A very fantastic comeback from the young lady Chevrons. The goal is to keep South African under-19s below 110 to aid their chase, as that will give them enough time to reflect and select shots. The new batter in is Daniel Boshoff. Right, lovely display of the bat, temperament display there, as that ball was a good length and threatening the stumps of the first ball, and wanting to preserve what is left of the batting order of the South Africa. A dot to end the 12th over. It's 87 on the board for 6. Uh, 87 for 6 it is. After 12 overs is Danelli Amia Lalo. This time South Africans seems in all sorts of trouble. Mr. Diwa from the pavilion and another dot ball. This has been brilliant stuff by Zimbabwean under-19 coming back into this game. Initially at over 7, it was 70 plus. Brilliant. It's real test for these South Africans now. They were in a very good position. Was lost 4 wickets within a touching of about 8 runs. Amandi Zora fell on the field earlier, but she's fine. The doctor's reports came in nicely, so nothing to worry about. She's well looked after in one of the biggest hospitals here in Nigeria, St. Nicholas Hospital, who are also partners in this tournament. Inside agent to that one, no run there. A field at 45, just making sure. This real test, like I mentioned earlier, for these South African batters, they need to get the team out of the woods here. 88 for 6 into the 13th over. The young lady Chevrons have been really good since the power play innings. They took only 1 wicket of the South African under-19 in the power play, and as of that time, South Africa had 64 for 1 wicket lost. And now look at it, 7 overs later, and they've only been able to add 92. They've only been able to add 28 more runs to that total. The boundary of the last ball of the 13th over. It is 92 on the board for 6 wickets lost. Good bowling and a lovely front foot display into the gap, into the covers, and Daniel Broshoff adds 4 more runs to
the batting score of South Africa. We really didn't see much of Daniel Bishop in the first game. Second game, she came in as the replacement bowler for Shofa Mukari, who got injured after a shot off the bat came in contact with her feet. So she came in to finish the bowling spell of Shofa, did it beautifully, and then got the chance to batten down. She's back in the team, and there's the highest partnership we've got in so far is the opening pair, Ashley Bernard and Chanel Venter, 55 off 30, with Rita Billy unable to replicate that, and a partnership ending of just 9 off 7. The only double figures after that was Ashley and Jaylee. It's good to see how these Zimbabwean under-19s have come back into this one. We thought South Africans were going to run away, but cricket being what it is, continues to test all the players here. Flicks that one away towards deep square leg, fielder there, protection. They wanted a second one, but she won't get Mia Lalo. Already 2 balls in, Tadiwa with 2 wickets and just giving out 9 runs in 2 overs. In 3 overs, my pardon. Just misses the hand of the bowler. Does he get to the boundary? Yes, it does. Full display of the bat. Nicely played through into the middle of the long on and long off. Brilliant shot. This one went through that bowler's hands and finds the gap between long on and long off. Disappointing for the bowlers. She had it. She could have stopped it and fielded to her own bowling. Tadiwa bowling the 14th over. 96 for 6. Gradually, Maker would be wondering a target of 180, and she was looking the part with her openers from that first 7 overs and 70 on the board to now things being slowed down. She walks it on the leg side this time. 1 run completed. Slightly fuller this time, that ball, and the field batter just flicks it to the leg side and takes herself off strike. Short of a length, that ball is. The batter tries to court but finds the fielder. Dot ball. No one is enjoying the bowling spell better than Tadiwa right now. Into that gap, but there was a fielder in the deep, and they will settle for 1 run. Rotating strikes as boundaries are slowed down. And end of the over, a pretty tidy over for Tadiwa as the bowling inning comes to an end. It is 99 on the board for 6. Dot of the first, couldn't find that gap. Mialelo, beloved Biza, taking advantage of our experience. Above the bowler, and they will settle for a 4-run fielding error by the captain. And South Africa can now breathe a sign of relief, already crossing the 100-run mark. Plenty of overs to come. That replay again. This comes on there. Chip it over the bowler. Was good enough. Was there. Keeper came around it but couldn't get her body behind that one. Another boundary, much required and needed by South Africa. Again, into the gap this time. Fielder right there. It will be just a single. 15th over. And this
might just drop around the figures of Maker and Mapuso. One run it is into the gap. Straight too long on. And it's one run they will settle for. Mia and Daniele confidently and very quickly rotating strike. Boundaries are not coming, but certainly the boards are ticking. 6 runs already in this over. In the air it goes. And the fielder in the deep drops the catch. First dropped catch of this match, much to the disbelief of beloved Biza. And it's our captain, the captain herself. Very disappointing. She rushed into that one. She should have waited and misjudged the timing on that one. I think Zimbabwe under 19 have done so well. Batting scorecard there. Ashley Bernard, 40 of 29. And Chanel Veta, 16 of 13. The only double figures in the top 7. Now Mia Lelo and Denele Bishop looking for that partnership.
Brilliant line. Ask a bit of question there. Salem. Inches both decently okay. 107 for 6 into the 16th over. Very lovely job by Tadiwa and Beloved to keep the run rates down. To the 3 runs in 8 overs was what South Africa batters were able to add on the board, bringing the run rates to 4.2 per over. And now both bowlers' bowling spell has finished. It's now in the hands of the remaining bowlers to try and see out the rest of this game off the back of the bat. No much power behind it as the fielders are quickly behind the ball. 1 run and Mialilo goes off strike. Short attempt misses the bat. And a leg by Obi, 1 more run for South Africa. The runs are slow. The boundaries haven't appeared in quite a while, but the board is certainly taking with singles. A stumped opportunity missed there by Beloved, as Mia Lilo will survive that scare. Good bowling, good length from Salem. Wonderful delivery guided towards the fielder in the deep. 1 run, Mia Lilo takes herself off strike to begin the 17th over on strike. It is 110 for 6 after 16 overs completed. The conditions have really been hot the past 3 days. Today being the fairest of all those days. But these players have shown resilience, patience, focus. It's Tawayana shape who will continue from the pavilion end of this over. Nia Lilo, 13 of 20 deliveries. Now she has to get going. A brilliant line. That 4th, 5th stump line. The umpire happy with that one. Tawana Shah only bowled 1 over before giving out 9 runs and has to come back. And she started off very, very nicely. As time goes big, Fuda in the dip, long on comes into play. On Jesse number 12. Strike rotation here. Certainly be the secret. Let's keep the scoreboard thinking until those last 12 balls. Brilliantly strike through the gap on the offside, and that would go all the way. Danelli is the one who has ensured the boundary recorded. 4 more runs for South Africa under 19 here. Short and wide ball properly pulled away to the leg side, 4-4 into the gap. A much near boundary for South Africa under 19. The target 180 looks very unrealistic at this point, but they can still put something much more defendable against the Zimbabwe side. Off the back foot she plays, much power behind that shot, and it's another boundary in quick succession that nearly brush off. Having the time in the batting crease, already found a comfort space, and it's extorting that. Replay again, inside out on the offside.
And that's the beauty of his shot. That nearly moves to 19 of 13 deliveries. 9 run of the first over and another 9 in this from 4 balls bowled. 2 more balls to go. Outside off, but Daniel Brushoff goes towards the ball and attacks it. But it is a dot as it doesn't. Way to the boundary, and there you see it on that replay. Met the ball on the front foot. 4 more runs already in the penalty made over, and South Africa are going all full out in attack. On the leg side in the comfort zone. Not enough power behind it as there was a fielder in the deep to prevent a consecutive boundary. 1 run they will settle for. And Daniel goes off strike for Mia Layla. A little shimmy misses that one totally. Run out opportunity. Will that be given? Yes, it is given. Desperation requires desperate times. That's what South Africa under 19 here looking to do. It's Mia Lilo who departs for 14 of 23 deliveries. Corrections there. That call was actually from Daniel Brushoff. Felt that ball was far enough and trusted a quick fix to get her in the popping crease, which did not go through. Good hands, good pickup and throw from Bethel to Beloved. And they get a much needed wicket. Less than 3 overs of play left. And Zimbabwe already looking very confident. Ashley Van Wyk, the spin bowler, in now in the tail end. Mia Lilo still in the batting crease. The opening bowler looking to as well end this game for South Africa. Now a new pairing, already into double figures. Just 4 batters have got into double figures for the South African in this inning. With the highest being the score 40 by Ashley Bernard. The second highest by Daniel Brushoff 25. Just walked off the field for Ashley Van Wyk to come and add his own scores to the board. Ball from Salem on the leg side already. Mia wanted to call for 1. A wicket will have dropped there. Good decline by Ashley. Will stay on strike. The start ball is dotted. Briefly played off the front foot, but doesn't beat the fielder in the inner ring.
Another consecutive dot. Salem will take advantage of the tail end batting order and look to minimize the runs as much as possible. Scrambles are on here. And clearly, that brings us to the end of the 18th over and 127 runs for the loss of 7 wickets. 7 runs above the target of the Zimbabwean under-19 captain. She said 120 was a total she wants South Africa to get. Maker is far away from her own projected total of 180, but this is where we are into the last 2 overs of this innings. Current run rate sitting at 7.06 and projected score 141. We hope this will be a very good encounter coming through the second innings, but how things finish here depends on this lady with the ball from the pavilion end, and her name is Tawanayashi. Rocks back and hits that one on the back foot through the covers. It will just be a single. This is brilliant field placement here by the captain. 4 fielders outside the inner ring. Deep points. Long on, long off. And deep square leg would come in. Just having that umbrella field placement. Some left arm off spin. This will be turning away from the right-hand batter. Outside run played big. And a dropped catch. Consecutive dropped catches by the backward point. A big show was played and that edge into her arms this time was underneath it, but couldn't wrap her hands around the ball, and the scare survived. Pierces through cover regions this time. They will get a copy. 2 guaranteed runs there. Athletes just ensuring the scoreboard keeps ticking. Very crucial moments here. They know every single run is a nail on the coffin. But that is what pressure brings on. 9 deliveries left. Short pitch, wide off. Caught 2 points. Indecision, poor communication, almost costing South Africa under 19 there. But they completed that run. And it's safe to say that South Africa have just managed to bat themselves into a decent position here. Zimbabwe with the ball, they've been really good. Their batting hasn't really been that steady. They've not played beyond 83 runs in this tournament. The 83 coming against Rwanda, against Nigeria, the only way to register 80 on the board. Now it remains to see how they perform in chasing this run against a very effective South African side. Beautifully pulled to the leg side. It doesn't beat the fielder in the deep, as 1 run is what they will take from it. 1 more ball for Tawanasha. A run off every ball in the first 5 balls. A dot of the last 6 runs added to the total in this over. It is 133 for 7 wickets lost. We're into the last 6 balls of this innings. We've waited long enough. If you're unsure, it will be 10 minutes between these innings. Lost 30 minutes to rain early this morning. The skies are clear now. We're guaranteed a blockbuster this afternoon between Rwanda and Nigeria. That game promises to be an encounter worth watching. If you're following this around the world, we will be bringing you that game live
Follow the games on the YouTube page of the Nigerian Cricket Federation. Mutasa Christina. This time, this one will go all the way, maximum. And clearly, that pace helped here. Full delivery by Christina and timed beautifully by Mia Lilo, getting herself a first maximum in this tournament. South Africa have been explosive, and she also gets into that very scanty book of batters in this tournament to have played a maximum. It's quite a decent boundary here, but that one got the best of the tickets of edges and would go all the way for the needed maximum. Clearly, and just what you want in the last over. She will go hard, and as hard as she can to get as much as she can to ensure the pressure is already up on the bench. In Zimbabwe, we have just 10 minutes to swap things around. Yesterday, the players in the match goes big this time over the inner ring in front of point. Get a double. That brings the score in this over to 8. We're just going to say, Peter, yesterday we had an amazing electrifying atmosphere here. The legacy program that got kids and players together, full 3 hours of intense involvement. The players enjoy their time. That the footage will come to you after this innings. Foolish delivery, driven straight to the fielder. It covers, no run from that one. 3 deliveries left in this innings. It's been a fantastic first innings, ups and downs. South Africa dominating the first 7 overs, losing a couple of wickets in quick successions to slow things down. She goes big, inside out, fielder comes around it. Yes, it's safe. Just be a single again. See how Zimbabweans have managed to turn this around. The projected score after the first 7 overs was expected to be 190, 200. But they've got those wickets in the middle overs to slow things down. But again, these young South Africans have managed to just keep the scoreboard thinking, not taking their eyes off the chase, the target chase. Short pitch smashes that one through the offside. Fielder fumbling that one and allowing a second. Zimbabwean fielders need to do a lot better. I think they've come back strongly. Last delivery of this innings, projected it should be 145, but let's see how many they will get from this. Shimmies down the wicket, right in the block hole, scrambled there. She wants the second, no. The score would be 145 runs as projected. For 7 after 20 overs, this is what we have in our hands, 146 to win in 20 overs. Zimbabwe under 19 will have to come and chase, and that's a batting scorecard for you. Ashley Bernard up there with Chanel, that partnership, and start early on in the first 5 overs, 40 off 29, 16 off 13. Other double figures, Mia Lilo, 25 off 29. Danelli Bishop, 25 off 17 are the key supporters here. Extras 19 also rank in top 5 scorers, and it's 145 for 7, South Africa under 19. The bowling charts there, Salem Museka 2, Tadiwa Gurusa 2, and Beloved Biza 1 for 17 off 4.
A decent economy rate there by Tadiwa 4. And Beloved Biza 4.2. And clearly the partnership at the top there, the two openers, Ashley and Chanel. And of course, Milo and Denelli at the bottom there, 39 of 34. And then 50 of 30. In South Africa, 145 for 7 after 20 overs. Ashley Bernard, 40 of 25. Mia Lilo, 25 of 29. And we'll come back after 10 minutes for the chase.
as we see the umpires walking on to the pitch. And of course, the South Africa Under-19s are very electric in the field, having won the toss earlier on and deciding to have a bat first. They found themselves setting a target of 146 to the young lady chevrons. Of course, courtesy to Ashley Bernard there on your screens, 40 of 29, and a very good cameo at the back end from Mia Lelo and Danili Boshoff contributing 50 runs. We have a game on our cards here as opting the batting is going to be none other than beloved Biza alongside Nicolette Nika opening the batting for the young lady chevrons. They will need 146 in their allotted 20 overs in the chase of match day 4, game number 7 of the Nigeria Invitational Women's Tournament, live here at the Tafawa Balewa Square. No surprise, it's going to be Mia Leroy to open the bowling from the pavilion end. Picked up 2 wickets at the last time these two faced off each other. First ball, here we go. Plays it on the back foot, watchfully there from our beloved Biza. As I also welcome Peter back into the commentary box. Welcome back, Peter. Thank you very much, Bob. It's nice to be here forward. The start of the second innings of this game. Very fantastic inning. Very good display of both bowling and batting prowesses. And this is the second inning, which means to see if the batting of the Zimbabwe Under-19 can complement what the bowling did in the first inning. Into the block or straight away from Mia Leroy. She is pumped. She knows that 146 won't be an easy target to chase down by the younger lady chevrons. Of course, given that the last time they faced off each other in the Cricket South Africa Youth Tournament back in Durban in January, where, of course, South Africa Under-19s posted 135 runs. She picked up 2 wickets in that particular game. She would love to make the inroads up front, up against her beloved Biza, who is looking for a big total and a big score into the pads, works it on the onside, but not run taken. It's all going to depend on shot number 3, beloved Biza. She's been getting into the 20s, but of course, given the player of her caliber, they would love her to play out at least the power play and see where they find themselves without losing a lot of wickets. South Africa, on the other hand, in the first innings, they are on 62 for the loss of 1 wicket right after the power play, which set, of course, a very good platform for them to finish strong. I remember very much after the second game against Rwanda, the captain Maposa had to come out to say that if they had more wickets, that they would have had a chance of winning that game. So what they want to do right now is play out this game as much as possible, because if the wickets are available, then the runs are chaseable. 7 runs to gate, of course, moving forward. If they are to chase down 146, is the young lady chevrons who are yet to get off the mark. Takes a little shimmy, picks it on the full, straight as a die, nobody moves. And the chase is in vain as she gets off the mark. Inside is beloved Biza. Met that ball and just fed off the pace coming off that ball. 4 quick runs into that straight gap between the open field, and that is just the kind of stats that Zimbabwe Under-19 will be needing, as they have a very, very huge run margin to chase. Beloved Biza always getting off the mark in the similar fashion we saw the other day against Team Rwanda, with a lovely cover drive off Diane, the captain. But again, they would love to see her bringing out the A game, especially in this particular fixture. Last ball. Plays it straight to the fielder at pointer. And of course, with that dot ball, we come to the end of the first over. It is a 4-0 Zimbabwe Under-19. There is that 4 again. On off the front foot and straight. Lovely shot there, of course, on the replay from beloved Biza. A very confident shot. Coming off, of course, the sweet spot of her blade. The challenger, the biggest challenge ahead for the young lady chevrons is how they're going to go by playing the spin duo over Ashley Van Wyk, alongside, of course, Mika Van Vos, the captain, and of course Mia, who makes a comeback, of course, into the
I beg your pardon, Zia, who makes a comeback in the first 11 of the South African U19s. Those are 12 overs of spin. Ashley Van Wyk, with no surprise, will be sharing the knee cherry with Mia Leroux, coming in from the Court of Appeal end. She has a deep square leg and deep mid-wicket, the only two fielders outside the ring. Enticing delivery there, inviting her for the drive shot, but Nicolette, who's been looking for runs in this particular tournament, watchfully plays that fast ball. Lovely display of the bat, narrowly missing that edge as the sharp hands of Jelly Fernanda would not hesitate to get it. The first wicket in the two games that South Africa has played, the first wicket of each game has been an edge behind to the wicket keeper. Remains to see if they will continue on that streak. Expect to see a lot of leg breaks from her. She's always threatening the outside edge. One of the reasons, of course, she has a slip in play and the backward point and pointer and cover. Very fully packed offside. Half track on that occasion. Loud appeal. And the finger is up. She draws fast blood. Is Ashley Van Wyk. Look at the celebrations as Nicolette has to depart. She's had a drought of rounds. As they pick up the first South Africa U19 4 for 1 after 1.4. A very tempting ball there, bowled by Ashley Van Wyk. The best decision below Kukong was that swing. Already saw the pitch, saw the turn, but that accelerated swing made her so I missed the shots and play before the ball. Straight LB, good sighting, good call by the umpire. South Africa already starting off brightly. Unfortunately, there you would say, having a look at that again on the replay, almost a half tracker, kept a tad too low, deceiving, of course, Nicolette, who departs without troubling the scorers. Exactly what the doctor ordered for the young South Africa U19s. Not the best of tournaments that Nicolette has had. First game scoring 4 of 8 against Nigeria and a silver dog against Rwanda with 0 runs off 2. It's been here now and she hasn't really been able to find that settlement, hasn't really been able to settle down. 3 straight dots, go off for the fourth ball, and that just mounts more pressure to whoever is coming in the batting order. Tadiwa joins a beloved Biza. That was the first wicket, of course, courtesy of Ashley Van Wyk. Leg break, went for a big sweep shot, kept a tad too low. Easy decisions, you'd say there from the umpire. Enticing delivery again, inviting for the drive shot. This duo, of course, made sure they didn't leak a lot of runs, put on a show with the ball. Tadiwa and beloved Biza, but they have a big task ahead with the bat in hand. Up and over, nobody moves. 1 bounce, 2 bounces over the ropes. Making a statement. She doesn't need any sighters either. Tadiwa to get off the mark as we come to the end of the second. The scoreboard reading 8 for 1. Carefully calculate a shot of the first bounce. She fed off and high. She went over the infielders. It was certainly destined for the boundary anyways. And that is a big boost for Zimbabwe. The runs have been slow, but 2 boundaries, taking their total to 8 for 1 after 2 overs. Not about the first 2 overs, you'd say here for the young South African U19s. They've picked up a wicket, making sure they keep Zimbabwe under 19s, under 5 runs and over. Mia Leroux, who's coming into ball, has second over. She has a galley fielder in play for beloved Biza, who takes a little shimmy up. Beats the diving effort from the fielder at short mid-wicket as the ball races away to the boundary, putting Mia Leroux under the pop. Straight up is a beloved Biza as she picks up a second. Oh boy, I was coming so full. That was the best way to deal with it. Just feed off the pace and send it to the boundary. The second boundary from beloved Biza, and it's coming from none other than the first person who considered the boundary to Mia Leroux.
This is very good technique from beloved Visa, given that Mia Laura has been getting lateral movement in the previous games. She's taking a little shimmy to pick the ball on the full. Walks it to the outside. No run taken this time round. Been very efficient in the field. I will commend South Africa on the 19 women's. They've been very, very tired in terms of fielding, not giving any licks and taking every chance that they catch or the run out that they get. And if there's anything Zimbabwe needs to do is replicate what they did in the first inning, and that's play into the gaps. Into the pitch, walks it on the onside. A lot of work to be done in the deep part, but that work will be in vain. Good over it is turning out to be for the young lady Chevrons. Pace owner from Mia Leroy, and she pays the price. Beloved just finding out with him those in-swing balls coming to the leg side, and all she just has to do is just redirect it to where the region he was already going to, taking advantage of that open field setting on the leg side. Talking about the technique of our beloved Biza, who is already into double digits, 12 off 9. She's kept her eyes on the ball throughout. Change of pace. Well played by beloved Biza. Why not after, of course, getting 8 runs of the first 4. Tricky field setting there done by Mia Lelo, not having a square leg and a wide fine leg, and still the balls are always swinging to the leg side region. Beloved hasn't really been able to combat the ball given the pace and the swings, but an open field like that would be punished on a regular day. Full again, but this time round straight to the fielder at mid-off. No run taken once again. Coming back to your point, Peter, I don't mind the field set here for this young South Africa under-19s. It's one of those days where you ball an in-swinger, but very good shot played by beloved Biza. Of course, with the experience she possesses, we're talking about the player who has played the ODI cricket, if I'm not mistaken, 20 games for the Lady Chevrons. So you would expect to see her, of course, bring out her A game. Rocks back on the back foot, but this time round straight to the fielder at point. No run taken again. 8 runs coming off. The third over, 16 for 1. They've not done a lot of running in between the wickets, but certainly they've been finding the gap. And you look at that boundary of the front arm. And that was the first boundary that she got off Mia Lelo. This is the second one by Tadiwa herself. And this is, another boundary that she scored off Mia Lelo again. Mia Lelo has given below Biza 3 boundaries. 4 boundaries already, no running in between the wicket yet to the comeback fielding, and making Zimbabwe play really, really hard. And I think it is part of the game strategy. Ashley Van Wyk comes back to ball her second. But again, when you look at those 2 boundaries in the previous over, she's not bowling to her strength. Is Mia Lelo. She had a gully in play, 5 fielders on the offside, and she kept targeting the pads. Touch and go, nowhere to go, says the fielder at covers. The fielding, of course, on the other hand, has been tremendous in their previous 2 games. Is the South Africa under-19s. They won't give you many runs in the inner ring. Shot on the occasion, flat-batted, and the catch is being taken. Talking about the fielding, look at that catch. She had to cover a lot of ground from mid-off, trying to hit it over the bowler's head, but Tadiwa has to depart for 4 or 5 deliveries as they pick up their second. Is the young South Africa under-19s. Similar to the shot she got to the boundary, this time the knock was in the middle of the bat and couldn't go as further as she wanted to be. Good catch, good stop, and a very much deserved wicket for South Africa. They've been very, very competent, making sure that those balls haven't found the gap and making Zimbabwe play off the bat of all time to get to the boundary. And that is just what the tactical approach was, and they are getting what they have been searching for. And again, it's Ashley Van Wyk again picking up her second wicket for just 4 runs inside 2-pointer, 3 overs. She's made it a habit in this 5th edition of picking up wickets up front in the power play. Always putting the opposition side on the back foot. Already they have lost 2 wickets. Is the young lady Chevrons needing 130 in 99. They have to rethink. Beloved Biza, on the other hand, still striking it at over. Let's have a look again on the second wicket. Half of the occasion, allowing the bottom hand to come into play. But what a take. Look at the celebration. It tells you
how important that wicket was. 16 for 2 after 3.3. They kept up with an attacking field for the new batter in Lorraine. Slip in play. Shot on the occasion as she gets off the mark. They will be looking for the double. But they will settle for only 1 run as Beloved Biza is back on strike for the very first time. She's going to be facing Ashley Van Wyk. They know this is the big wicket they need. If they are, of course, to pick up yet another win is the young South African U19s. 2 deliveries to come for Beloved Biza, who is already striking it at 100. Plays it on back foot straight to the fielder at covers. She wasn't part of that team that played in January in Durban in that youth, as she was part of the Lady Chevrons taking on New Zealand. Last ball shot pulled away powerfully into the gap between the 2 fielders at long on and deep mid wicket for yet another boundary. Very good way to close off the 4th over is Beloved Biza as she moves into the 16th. 21 for 2 after 4. And looking back at that ball again, that was the ball pulled to the leg side. Very beautiful boundary. And it's first time another batter is getting the boundary. Another bowler, my correction, is getting the boundary. Is giving a boundary to Beloved Biza. It doesn't matter who is coming in. She's focused and she knows the mantle on her shoulder and she's taking that responsibility. Again, talking about Beloved Biza, who is now 4 boundaries so far. Every boundary, she's thrown herself into the right position. When you look at those 2 boundaries of Mia Lelo's, where she was angling it into the pads, elbow high into the vacant region, and this half tracker from Ashley Van Wyk that she hit into the cow corner region. Picked up length quite early. She was well positioned. Should be a sign of worry to the younger South Africa U19s. They need her wicket. They know how important the wicket of Beloved Biza can be in this fixture. 125 to get in 96. Last 2 overs of the power play. South Africa were sitting on 62 for the loss of 1 right after the power play. They are 41 runs shy is the young Lady Chevrons having lost 2 wickets. How many more can they add in the power play given that they are only 2 fielders outside the ring? There is a bowling change coming in from the pavilion as Mia Lero is being rested. Kananelo Mokwena. No sleeping play. There's a start man and fine leg. Full and quick. Nearly takes the outside edge. A very good start from Kananelo. Late reaction from Lorraine, but luckily it wasn't anywhere near the stumps. And South Africa are taking advantage of the fact that the Zimbabwe bench are under pressure. The runs are not coming. Only one run has been completed in between wickets. The tight fielding will make them play more balls or attempt to find more spaces in the gap. And in that state, either a run out or catch might surface. No ball signal by the umpire on the occasion. Overstepping from her second delivery is Kananelo. Late shuffle from the fielder bowler. She was running in, missed a step in, and just lifted herself very, very close to the stumps. That jump was probably more than she usually does and called by the umpire, and now Lorraine has that freedom and immunity to go as big and high as she wants with the next ball. She has the green light, free hit to come. Full wall, square driven again between the 2 fielders. A lot of work to be done in the deep by the captain. What an effort. The fielding has been spot on for the young South African side as they only pick up 2 runs off the free hit. Lovely played in between the gap, but you cannot undermine how effective this South African under-19 have been running in while batting as well as in the fielding.
they've not given any unnecessary runs or given chance to it. Always very, very agile and quick on your feet. This is where, of course, the young South African under-19s can be very, very dangerous. They have managed to tick all the boxes despite the fact that they lost against Team Rwanda, a very, very close game where they lost by 4 runs. The bowling partnerships, the batting partnerships, and look at that fielding. Cricket is a team game and everybody has to work hand in hand and contribute and support as well. And that effective and efficient fielding method employed by the captain and being accompanied by our teammates saw the runs cut short by 2. And that is actually what they need to do, keep Zimbabwe as low as possible and round up this game quickly as possible. Short ball, a very short ball, not dealt with by Lorraine. And again, smartly done by the South Africa under-19s. When you look at the way they have planned for Beloved Biza, who is on 16 or 14, they make sure they target the other batter to make sure she doesn't face a lot of deliveries. Is Beloved Biza. She can be very dangerous, having picked, of course, 4 boundaries, but they have made sure they keep her off strike. Wides on offer, says the umpire. Sarika will need to either keep Beloved or strike or get her out, and she's losing comfortable, but it's just a matter of time. The wickets are falling and the pressure might get to Beloved soon, but she's doing a very comfortable job. Not too much, just getting the boundary when she had the chance to. They really need to start running in between the wickets. Lovely shot with offer to the occasion, and she pays the price. Cananelo throws the kitchen sink, and that one is Lorraine as she picks up her first boundary. Match जाकर जुड़ जाए क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है। और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोगों को चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिपर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिपर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं,
उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे। ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव, तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए, और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं, आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है, आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे। ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव, तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं
टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं, आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई
कौन सी टीम विन करेगी। अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों का लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ में आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी। अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों का लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ में आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव
लाइव बंद होने वाली है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है। और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं, आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है, आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोगों चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में
क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए, और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत।
तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं बिना किसी टिपर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ में आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए, और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं, आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है, आप सभी लोगों का लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ में आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं बिना किसी टिपर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए,
तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फिलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं,
ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फिलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फिलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी
लोगों से पर मैच के 20-20 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए, और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं, आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों का लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या
नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं, आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोगों चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिपर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई
कौन सी टीम विन करेगी। अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी। अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों को लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं बिना किसी टिप्पर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव
बंद होने वाली है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। भाई कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है। और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं, आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों का लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिपर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिपर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है। और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है और क्यों, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लो प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में
क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए भाई। कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले का विनर देख सकते हैं। अच्छा मैच हो सकता है, और कुछ दिनों से जितने भी जैकपॉट उड़े हैं, जितने भी घोड़े उड़े हैं, वो सब के सब हमने कैश किए हैं। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को चैनल सही ना लगे और ठीक है आप सभी लोगों का लॉस कवर ना हो, तो आप सभी लोग चैनल को लेफ्ट मार सकते हैं तुरंत। तो बिंदास हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सारा लॉस कवर कर लीजिए। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हर मैच की एडवांस प्रेडिक्शन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्री मैच एनालिसिस, जिससे आप सभी लोग खुद ही अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हैं, बिना किसी टिपर के भरोसे रहे, ठीक है, बिना किसी को पैसे दिए। और साथ के साथ में जितने भी बड़े बड़े टिप्पर हैं, विक्रम सिंह गांधी, साहिल थला, डरबन दादा, डरबन टकला, जो आप सभी लोगों से पर मैच के 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उनकी सभी की पेड रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा देता हूं मैं। तो आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हर मैच की मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दी जाती है। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, तो ज़्यादा जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में आप सभी लोगों को पता है लाइव बंद होने वाली है। तो जाकर जुड़ जाइए सभी के सभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप सभी लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा समय चलने वाला है नहीं ये लाइव। तो जुड़िए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी लाइव में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बड़ा ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है, और यदि अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस मुकाबले का मैच विनर क्या है, और क्यों कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, या लंबी यस करें या नोट करें सेशन में। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, इस मुकाबले की जितने भी अपडेट हैं, मैच विनर रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट, सारी की सारी आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाइए फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर मैच की प्लेयर और फ्लॉप प्लेयर आप सभी लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सभी लोगों को फैंटेसी रिलेटेड भी हेल्प हो जाए, और विकेट नोट भी आप सभी लोग उनसे खेल सके। और इस मुकाबले के जो अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने अभी बता दिया, उनकी विकेट नोट भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। तो जाकर देखिए फटाफट से, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बंदे यहाँ पर लॉस में क्रिकेट में और हार हार कर परेशान है, अपना सारा लॉस कवर करना चाहते हैं, तो जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़कर सारा लॉस कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी लोगों को किसी को भी कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मुकाबला जो खेला जा रहा है वो शानदार मुकाबला हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों को इस मुकाबले की एंट्रीज भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इस मुकाबले की जो एंट्री होगी आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए भाई। कौन सी टीम विन करेगी? अरे भाई इस मुकाबले का विनर यार अभी अभी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पर,